Hello dear children, welcome to the class. Today is our first session of the chapter Admission of a Partner from Partnership Accounts. And in today's class, we'll be learning how to calculate the new profit sharing ratio among the partners when a new partner is admitted into the partnership. Now let us learn how to calculate the new profit sharing ratio when a new partner is admitted into the partnership with the help of an example. Now, beta, whenever a new partner enters into the partnership, the existing profit sharing ratio among the old partners gets changed, fine? And obviously, the profit sharing ratio gets changed. So this is going to result into admission of a partnership. This is going to result into reconstitution of the firm. Fine. The firm is reconstituted. It is going to result into reconstitution of the firm. Now see, A, B and C were partners and they were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Fine. A, B and C are partners and they were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. D is admitted into the partnership and he is to get 1/5 share of the total profits. 1/5 share of the total profits. Fine. Now the question arises that what is going to be the new profit sharing ratio after D's admission. Fine. Now see, 1/5 share of the total profit means, let us first understand with the help of a diagram. Fine. Let us say this is the whole share of the profit. Fine. And if I divide this in 5 equal parts, fine, I am going to divide this in 5 equal parts. Fine. Now, D is getting 1/5. That means one part of these 5 equal parts out of the total profits. So this is D's share of profit. So D is getting 1/5 share of the total profits. So the remaining profit is 4/5 of the total profit. So what am I going to do is, my first step is I am going to calculate the remaining share of the total profit. Fine. And how am I going to calculate it? I will subtract D's share from 1. Let 1 represents the total profit. So 1 minus 4/5. 5 is the LCM. So in the numerator, I am going to get, so this is 1/1. In the numerator, I will be getting 5 divided by 1 is 5. 5 into 1 is 5 minus 5 divided by 5 is 1. 1 into 1 is 1. So the remaining share is 4/5. Fine. And you can see diagrammatically also that after giving 1/5 share to D, what remains is 4/5 share of the total profit. Now, nothing is given in the question. This 4/5 share of the total profit will be divided between the old partners in their old profit sharing ratio itself. अब कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता बेटा, तो जो रिमेनिंग शेयर है प्रॉफिट का, वो फिर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी सी, हमारे पास जो गिवन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, उसमें डिवाइड कर लेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, we are going to divide the 4/5 share of the total profit in the ratio of 5:3:2. So A's share in the remaining profit will be 4/5 को 4/5 of the total profit को A, B, C divide करेंगे in the ratio of 5:3:2. So A is going to get 4/5 into 5/10. See the sum total of
this ratio is 5 plus 3 plus 2 is 10. So A is going to have 5 by 10 of 4 by 5 share, and if we calculate it, it is 5 fours are 20 and 5 tens are 50. Then B will be getting 4 by 5th का 3 upon 10 share, 4 threes are 12 and 5 into 10 is 50. C will be getting 2 by 10th of 4 by 5, that is remaining share. So 4 twos are 8 and remainder denominator will be 5 tens are 50. Fine. Now see, you will find that these fractions are with the denominator 50. So in order to write the new profit sharing ratio, D's share, that is 1 by 5, 1 by 5 should also be with the denominator 50. So denominator 50 लाने के लिए मुझे इस fraction को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 10 upon 50. Fine. So that you can see that the new profit sharing ratio between A, B, C and D, it is 20 is to 12 is to 8 is to 10. Now you can see that we can simplify it. हम इसको simplify कर सकते हैं. 20 is to 12 is to 8 is to 10. 2 हमारा common factor निकल रहा है. So the new profit sharing ratio would be 10 is to 6 is to 4 is to 5. So this will be our new profit sharing ratio after D's addition. अब question arise होता है कि अगर ये new profit sharing ratio है, then what is going to be the sacrificing ratio between A, B and C? A, B और C ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है अपना फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो 1/5 शेयर डी ने लिया, वो किससे लिया था? वो A, B और C से ही तो लिया था. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए we know that the formula for calculating sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Fine. We subtract old ratio. We subtract the new ratio from the old ratio. So sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Fine. अब देखो A का अगर मुझे निकालना है कि A की whether A is a sacrificing partner or not and how much share has he sacrificed. So A's old share was 5 upon 10. New share is, see if we take the total of this is, it is 10 plus 6 plus 4 plus 5 which is equal to 25. So A share is 10 upon 25. Fine. Let us take the LCM. The LCM of 10 and 25 is it's 50. So 50 divided by 10 is 5. 5 multiplied by 5 is numerator में आ जाएगा बेटा 25 minus 50 divided by 25 is 2. 2 multiplied by 10 is 20. So we are going to get the sacrificing share as 5 upon 20. अब ये बेटा fraction जो है ये positive है, तो A 5 upon 20, A has sacrificed 5 upon 20 of his share and A is a sacrificing partner. We are going to calculate the sacrificing ratio or sacrificing share of B in the same manner. B का old share था बेटा 3 upon 10 minus new share is 6 upon 25. We'll take the LCM. LCM is 50. In the numerator, we are going to get 5 threes are 15 minus 6 twos are 12. 15 minus 12 is 3 upon 50.
सो अगेन अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, यानी कि बी भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और बी ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, 3/50th ऑफ द टोटल प्रॉफिट. नाउ in the same manner we are going to calculate the sacrificed share by C. C का old share था 2/10, न्यू शेयर आ गया 4/25. LCM is 50, न्यूमरेटर में आएगा 5 2s are 10 minus 4 2s are 8, so 10 minus 8 is 2/50. Fine. Again a positive fraction, तो C भी हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुई, see you can see the denominator is 20, denominator is, sorry it should be 50, denominator is 50 50 50. Fine, the denominator is 50 50 50, so this can be expressed in terms of ratio. So the sacrificing ratio between the old partners, that is A, B and C, will be 5:3:2. अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो 5:3:2 is nothing but the old profit sharing ratio. तो बेटा क्वेश्चन में जब आपके पास इनकमिंग पार्टनर का शेयर, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, डी जो आ रहा था वो 1/5 शेयर के साथ आ रहा था, 1/5 शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स. फाइन. तो अगर क्वेश्चन में मुझे दो चीजें दी हुई हैं, क्या ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और डी कितने शेयर के साथ आ रहा है वो दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल लेते हैं, लेकिन there is no need to calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratio in this case would be the old profit sharing ratio itself, और ये अभी हमने कैलकुलेट करके देख भी लिया. So there is no need of calculating the sacrificing ratio in such a case, जहां पर सिर्फ आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, शेयर इन प्रॉफिट दिया हुआ है, वहां पर आप सीधे ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं. I hope that this case is clear to everyone. Now let's discuss the next case, our second case. अब देखिए क्या दिया हो सकता है बेटे. Let us say that X and Y are two partners and they are sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Fine. X और Y दो partners हैं, profit sharing ratio उनकी, this is their old profit sharing ratio. They are sharing profit and loss in the ratio of 7:3 and they are admitting Z. Z को वो admission दे रहे हैं and Z is admitted with 3/7. Z is admitted with 3/7 share of profits in the firm. अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है which he takes. Now this 3/7 share Z is taking 2/7 from X. Fine. 2/7. The language will be that this share of 3/7, the total profit of the firm, which Z is taking, he is taking 2/7 from X and 1/7 from Y. 1/7 of the total share of profit which Z is having, he is taking it from Y. अब आप बेटा अगर इन दोनों को ऐड करो, 2/7 plus 1/7 है ना, 2/7 plus 1/7, LCM is 7, numerator is 2 plus 1 which is equal to 3/7. तो आपको देखो कि X ने अपना 2/7 शेयर दिया, Y ने अपना 1/7 शेयर दिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास इनकमिंग पार्टनर का Z का शेयर निकल आया, टोटल शेयरिंग प्रॉफिट्स. अब how to calculate the new profit sharing ratio in this case? Now X old share was 7/10.
अब बेटा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है he has given 2/7 of his share to Z. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो ये दी है कि 3/7 जो शेयर है उसमें से 2/7 Z is taking from X, यानी कि X अगर अपना 2/7 शेयर दे रहा है तो उसके पास क्या रह जाएगा? We are going to subtract 2/7 from his old share, that is 7/10. LCM is 70. Numerator will be 7 sevens are 49 minus 10 into 2 is 20. So numerator will be 29/70. यानी कि X का new share will be 29/70 of the total profits. Similarly, we will calculate Y's share, new share in the total profits of the firm. Y के पास ओल्ड शेयर था 3/10. Y ने अपने शेयर में से 1/7 दे दिया तो मैं 1/7 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी फ्रॉम 3/10 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ Y. LCM again 70. 7 into 3 is 21. Numerator is 21 minus 10 into 1, 10. So it is 11/70. Your Y's new share is 11/70. Again, if I need to express the new profit sharing ratio, so Z का शेयर भी मुझे किस फॉर्म में चाहिए? विद डिनोमिनेटर 70 चाहिए. तो बेटा 3/7 को विद डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. तो मेरे पास Z का शेयर आ जाएगा 30/70, which is 3/7 only with denominator 70. So the new profit sharing ratio between X, Y and Z is 29:11:30. The new profit sharing ratio between X, Y and Z is 29:11:30. अब अगर क्वेश्चन अराइज होता है बेटे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, X और Y ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, तो अगेन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है. अगर आप बेटा इसको निकालोगे ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमें पता है फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तब भी आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगी, जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. देखो लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या थी, दोबारा से पढ़ रही हूँ, दोबारा से I'm repeating it again. The language of the question was that Z is being admitted with 3/7 share in the firm, which Z takes 2/7 from X and 1/7 from Y. यानी कि X और Y ने जो सेक्रीफाइस किया है, आप देखो this fraction is with the same denominator 7/7. तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी बिटवीन X एंड Y, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 2:1, क्योंकि X 2/7 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और Y 1/7 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है. तो अगेन इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके पास सेम ही आंसर रहेगा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y will be 2:1 itself. You can calculate and verify the same on your own. I hope that the second case for finding out the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio is clear to all of you. Now let's take another example. You can say it is case 3. Fine. Let us say that A and B are partners and they are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Fine. So this is their old profit sharing ratio. So two partners A and B are there and they were sharing profit and loss in the ratio of 3:2, and they admit C
they admit C as a partner for 1/5 share. They admit C as a new partner for 1/5 share in future profits of the firm, which he got. Let me write the language. Which C got equally, which C got equally from A and B. Equally from A and B. अब देखिए बेटा, है तो ये सिमिलर केस जो भी हमने केस 2 डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर केस है. बस इसमें क्या हल्की सी वेरिएशन है कि ये जो C का शेयर है 1/5, C ने एक्वायर A और B से ही किया है and he has got the share equally from A and B. We have to calculate the new profit sharing ratio and we'll just see what will be the sacrificing ratio. अब देखो बेटा, अगर C का शेयर 1/5 है जो कि उसने इक्वली लिया है A और B से, इक्वली एक्वायर किया है A और B से, सो आप देखो 1/5 का हाफ, 1/5 into 1/2 which is equal to 1/10, यानी कि 1/10 शेयर C ने एक्वायर किया होगा फ्रॉम A. फाइन, C ने जो शेयर एक्वायर किया है, मतलब C का जो शेयर है 1/5, he has got the share equally from A and B, यानी कि 1/5 का हाफ A ने दिया है, similarly 1/5 का another half which is equal to 1/10 C has acquired from B. फाइन, अब A और B ने अपना शेयर 1/10 और 1/10 C के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया. तो you can see again there is no need for calculating sacrificing ratio in this question also, क्योंकि sacrificing ratio A और B की आपको क्वेश्चन में दी हुई है. ये वर्ड इक्वली फ्रॉम A एंड B मुझे यही बता रहा है कि A और B ने इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस किया है. You can see also 1/10 from A, 1/10 from B. C is acquiring, so the sacrificing ratio between A and B is 1:1, that is equal. Fine. Now let's calculate the new profit sharing ratio. A की ओल्ड रेशियो थी बेटा 3/5. A ने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, सो -1/10. सो अगर मैं 1/10 को 3/5 A के ओल्ड शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, आई एम गोइंग टू गेट हिज न्यू शेयर. LCM is 10. Numerator will be 3 2s are 6 minus 1, which is equal to 5/10. So A's new share will be 5/10. B का ओल्ड शेयर था 2/5. B ने भी 1/10 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर दिया, तो B के पास क्या बचा? 2/5 में से 1/10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. LCM is 10. Numerator will be 2 2s are 4 minus 1, which is equal to 3/10. So the new share of B is 3/10. Again, मुझे अगर रेशियो लिखनी है बेटा, तो मुझे C के शेयर को भी लिखना पड़ेगा विद डिनोमिनेटर 10. C का शेयर है 1/5. अगर मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 2 से, फाइन, आई विल बी गेटिंग 2/5 into 2 10. So C's new share is 2/10. अब आप देखिए सारे फ्रैक्शंस हमने एक्सप्रेस कर दिए विद डिनोमिनेटर एज 10. 5/10, 3 A share is 5/10, B share is 3/10, and C share is 2/10. So the new profit sharing ratio between A, B, and C will be 5:3:2. The new profit sharing ratio between A, B, and C is 5:3:2, and the sacrificing ratio in this case will be equal. Now let's take up another example. It says that P and Q were partners.
P and Q were partners and they were sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They were sharing profit and losses in the ratio of 5:3. So 5:3 is their old profit sharing ratio. Now R is admitted for 1/4 share in the profits. R is admitted with 1/4 share in the profits. Fine. And now you see the language of the question, of which, see, language of the question is R is admitted with 1/4 share in the profits, of which he took 75% from P, of which he took, of which का मतलब कि 1/4 शेयर का 75% आर ने पी से लिया है, of which he took 75% from P and remaining obviously 25% हो गया है ना, and remaining from Q, remaining शेयर जो था वो Q से लिया है. तो अब आप देखिए 1/4 का, दोबारा रिपीट कर रही हूँ. सी क्वेश्चन सेज दैट आर ने 1/4 शेयर के साथ एडमिट किया है, ऑफ विच ही टुक, यानी कि आर ने लिया क्या, 1/4 का 75% फ्रॉम पी. सो 1/4 का बेटा 75% मीन्स 75 अपॉन 100. 75 अपॉन 100 मीन्स 3/4. फाइन. It is equal to 3/16. यानी कि R ने 3/16 शेयर किससे लिया है, फ्रॉम P, और बाकी बचा हुआ यानी कि 25%, बाकी बचा शेयर कितना होगा, देखो बेटा 75% अगर P से लिया है तो 100% टोटल होता है, 100 में से 75% गया तो 25%, 1/4 का 25%, that is 25/100. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 1/4, that is 1/16. तो 1/16 जो शेयर है प्रॉफिट का वो आर ने क्यू से लिया है, फ्रॉम क्यू. फाइन. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पी का ओल्ड शेयर था 5/8. P ने 3/16 दे दिया R को, तो P के पास कितना रह गया, 5/8 में से 3/16 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा न्यू शेयर कितना आ जाएगा, एलसीएम इज 16, 5 2 10 minus 3 which is equal to 7/16. Then Q ने 3/Q का 3/8 शेयर था जिसमें से 1/16 Q ने R को दे दिया, तो Q के पास क्या रह गया, 3/8 में से 1/16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम इज 16, 3 2 6 minus 1 which is equal to 5/16. R 1/4 शेयर के साथ आया है, R के शेयर को भी अगर हम एक्सप्रेस करें with denominator 16, तो we are going to multiply numerator and denominator by 4. So we are going to get 4/16. So the new profit sharing ratio between P, Q and R will be 7:5:4, and the sacrificing ratio between P and Q, see this we have already calculated, this is 3:1. Fine. क्योंकि P ने अपना शेयर 3/16 सेक्रीफाइस किया, Q ने 1/16 सेक्रीफाइस किया, so the sacrificing ratio between P and Q will be 3:1. I hope that all the cases which we have discussed today of calculating the new profit sharing ratio at the time of admission of a partner
is clear to everyone. That's all for today from my side. Thank you very much.